आज हम आए हैं फिर से अपने पाइथन सेशन के अंदर। तो हमारा पाइथन है, उसके बारे में आज मैं आपको बहुत अच्छी सिंपल चीज़ें बताने चाह रही हूँ। तो आते हैं हम, पहले आपको पाइथन इंट्रोडक्शन पाइथन का है। तो ये पाइथन के बारे में आपको बताऊँगी आज कि जो अगर पाइथन है, अगर इसमें आपको एक वर्ड भी समझ नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एजेंडा क्या है आज की हमारा पाइथन का? एजेंडा इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। आज हम 3 टॉपिक ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, हु यूज पाइथन एंड पाइथन फीचर्स। तो हमने 3 ले लिए हैं, 1 2 3। तो पहली बात, पाइथन को तो मैंने बहुत बार समझा दिया है आप लोगों को, तो पाइथन समझ तो चुके हैं आप। और मुझे ये भी तो बताना होगा ना कि पाइथन का जो है हमारा, तो पाइथन हम लोगों को अच्छे से इंट्रोड्यूस करना है। तो मेन सेशंस आज तक हमने इंस्टॉल किया पाइथन को, ऐसे किया वैसे किया, तो आज से हम अच्छे से समझेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। सो पाइथन की इंट्रोडक्शन हमारी स्टार्ट होती है। पाइथन हु इन्वेंटेड गॉर्डन ऑसम इन ईयर 1989। तो ये ईयर व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंटेड वाज 1991 एंड व्हेन ही मेड वाज 1989। सो ओके, सो नाउ अब पाइथन बहुत ईजी लैंग्वेज है, और ये तो मैंने आपको कितनी बार बताया है कि लर्न करनी और लिखनी, स्क्रिप्ट करनी, यानी कि बहुत ईजी है पाइथन, सबसे ईजीएस्ट है। पाइथन इज़ अ इंटरप्रेटर लैंग्वेज, यानी कि पाइथन जो है इंटरप्रेटर लैंग्वेज, यानी कि जो इंटरप्रेटर होता है, यानी कि हमारा जो पाइथन होता है उसके अंदर इंटरप्रेट लैंग्वेज है, यानी कि पाइथन में ना तो ज़्यादा एक लाइन एट अ टाइम चेक होती है, यानी कि कंपाइलर में तो पूरा सारी लाइन एक साथ चेक होती है, पर इंटरप्रेटर लैंग्वेज यानी कि वो एक लाइन एक बार चेक करेगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स लिटरली like objects means you have some objects, and object oriented in general words, object object is there which is has to be specified like variables or something else. It's just object oriented, like high level language. This high level language, you can first see the code. If someone is doing, you see the code, you understand it is written XYZ ABC or something else. So next is, it is derived from the old languages like C, C++, and Java. Now, old languages were not too cool or too easy for learning us, for us to learn, or Java or these. And in Python, if you write the same program in Python, so in as well as Java or C++, when you will writing in the C++ or Java, so it would be 3 to 400 lines, but in the Python it is just 50 to 60 lines. So for Python features, some of the Python features are easy, simple, and easy to use. Meanwhile, it is very simple for us and you to use. Like Python is is simple and easy to learn. Like if you see Python, so you will find it is easy, not difficult for anyone to learn. So first one is feature is run. Second, free and open source for everyone. Python is an example of the programming language which is very free for everyone. Means you can also install it in the computer. Python programmers or Python person who has created the Python doesn't ask you for money. That give me money if you are installing the Python. Some apps are there which are free, just like that. Python is also free. Third Python feature is it's high level language. High level language, I told you earlier also that it is just that it is not very much difficult to understand. When someone is scripting in front of you, you can understand Python also Python. Just like if someone is writing English, you can understand it. But if someone is writing some other language like
any language which is not for us, or we don't understand, or we don't know about that language, so we will not understand them. So portable यानी कि this Python language is available in iOS devices, Apple stores, Android Play stores, PEOS Windows, and uh, everywhere, means this is for everyone. Okay, so now Python, one more feature is left. Python, that Python is extendable, means if you are using the dictionaries of C++ and Java or C, that is also not wrong in the Python if you are using. Like in Python, of simple, if you take like this, if we have to assign multiple values, like it, this value a is equal to b is equal to 10. One, okay, but in the C++, you have to write a whole code to this. Now, next slide. So now you can see that now next topic, just who use Python? Who use Python in the industry? Some people of the our industry, means your computer industry, you can say easily. Many people of you and me, I also use by programming. So I love programming. So I am here to make it fun for you also. So मतलब प्रोग्राम पाइथन जो है वो कौन कौन यूज़ करते हैं हमारी इंडस्ट्री में, हम वो चेक करेंगे आज। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। ये देखिए, देयर आर सम कंपनीज लाइक यूट्यूब, नासा, नेटफ्लिक्स, गूगल, ड्रॉपबॉक्स, रास्पबेरी, बिटटॉर, बिटरॉइंट। So these are the companies of the world. So, ये कंपनीज जो है वर्ल्ड की हैं, तो ये इजीली पाइथन को यूज़ करती हैं। जैसे इन यू कैन सी many languages Python is a main language in which everything is scripted there. Like in YouTube, if you are YouTube is used for just web search features. Like Python is also used for web search features. Web search features means you have to search anything on the web. So web search features, Raspberry, these are two very less used these days. NASA. NASA defines everything, means if they have to do some scientific calculation, they will not do it again and again on the calculator. They have defined something, some thing, or one app for everyone who are in the NASA, so they can use that. Or Netflix is most common these days. People are watching web series here. So web source features, means Netflix web search features के लिए होती है अभी। Google also web search features. Google is the parent company of the YouTube. Now Dropbox and these are all used. Now these are the operators. Last time we did one operator, which was arithmetic operators. So from the next session we will do the operators of the Python and one operators. So operators are generally, let me tell you what are operators. Operators are nothing, just in the real life also you use operators. Like if you want to talk to a friend, so you talk. If you don't want to talk interacted to a person, but you have to ask from some work, so you put one person in between and tell him, add, means some person add that, please ask from him. So that's indirect usage. This is also an operator example. So guys, कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप नीचे कमेंट में बताओ, एंड लाइक शेयर कमेंट।